Now we'll start discussion of the writs. So how many types of writs are there? 5 writs. The first is habeas corpus, mandamus. यहाँ पर हम दो डिस्कस करेंगे. In the next page we will start the comparing. Habeas corpus. Now if you go with the literal meaning of habeas corpus, it means to have a body. So it means to have a body. Now what does the habeas corpus means? If you remember, we have discussed Article 22, and Article 22 of the Constitution talks about Article 22 of the Constitution talks about detentions, arbitrary protections against the arbitrary arrest. So it is talking about the two types of detentions, punitive detentions and preventive detentions. Now if any individual has been arrested under the either of the detentions, it has given certain protections to it. So under punitive, it has given protections that within a period of 24 hours of the period, the accused has to be produced before the nearest magistrate by the detaining authority, excluding the travel time, right? And under this preventive detention, it says that after a beyond period of 3 months, so the authority maximum period was 3 months, and beyond that, if the detaining authority wants to detain that individuals, has to produce the advisory body, which consists of a high court judge sitting or retired. Is it clear? But suppose that if the accused is not been presented before the magistrate within a period of either of 24 hours or beyond a period of 3 months. जैसे आपने क्वेश्चन था ना उस दिन कि सर बहुत जगह हमने देखा है कि फ्राइडे को अरेस्ट कर लिया एंड बिकॉज ऑफ दैट सैटरडे एंड संडे विल बी ऑफ, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा फॉर द रिमांड. इट मीन्स दे आर violating the rights, because the Constitution does not talk about the holidays. It says be within the period of 24 hours, excluding the time is nearest magistrate. Whether that jurisdictions fall under the magistrate or not, it is also not talking about that. Nearest magistrate they are be talking. Are you getting my point? If that person has been detained beyond the prescribed period, that detention is known as an illegal detentions, which has not been provided by the law. Then in place of that detaining persons, either the detaining detainee himself by the lawyer, or either of his relative or parents can file an habeas corpus writ in the Supreme Court in the judiciary under Article 32, and the court will call that body to be present in the in the court. It means to have a body in the court. So habeas corpus has been used against the illegal detentions. Illegal detentions आप समझ गए, right? Now this is been issued against the state or individuals. And violation of the order of Supreme Court will be considered as a contempt of court. Are you getting my point? Yes or no? Now the court will decide about the merit of the case. Why the detaining authority has detained beyond the period. And if there is no reasons to detain the persons, it will restore the right. It means free that persons from the detaining authority, from the detentions, and also compensate or also punish or make a provision for compensations of that persons. Yes or no? Right? But this habeas corpus has not been allowed, or it not been issued against a judicial punishment.
जुडिशरी ने जिसको प्रोनाउंस कर दिया, ट्रायल हो गई केस की, उसके बाद जजमेंट दे दिया एंड सेंड हिम टू द जेल. So in that case it will not be used. It will be used only against the illegal detentions either by the state or by any individuals or any individual authority or body. This is habeas corpus. Yes or no? Any doubt? 24 घंटे बस. Detentions, you are there in the class 22, article 22. तो 2 types of detentions we have discussed, punitive and preventive. ये जो 3 महीने का पीरियड है ना, that is related to preventive and this is punitive. जब क्राइम हो चुकी है तो अक्यूज को जब अरेस्ट करती है अथॉरिटी इन द रिस्पॉन्स ऑफ द क्राइम, इन द रिस्पॉन्स ऑफ कंप्लेन, तो 24 आवर्स में ही उसे डिटेन करना है. दैट विल बी एन इलीगल डिटेंशन. नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम. It is like except they have a very strong evidence that he is the person accused who has committed the crime, the court will punish. But that individual detain you has the rights that will be secured by the constitution, that though he has committed a crime, but being as a human being, he has also certain safeguard or rights against the constitution. That right is that he should be produced before the magistrate 24 hours of his exit. If the authority does not produce the accused or the persons, that detentions will be called an illegal detention. इसका मतलब ये नहीं कि उसको क्राइम से फ्री कर दिया गया, वो डिटेंशन इलीगल है. आपने किस बेसिस पर इसको 24 आवर्स से ज्यादा रखा? क्या ऑर्डर है आपके पास? द अथॉरिटी हैज टू शो देम. इट डज नॉट मीन दैट ही हैज बीन फ्रीड फ्रॉम द क्राइम. हिज डिटेंशन इज इलीगल unless and until present कर दिया magistrate has allowed his the detentions कि ठीक है detaining for the this number of period और judicial detentions हो गई. Unless and until. Are you getting my point? Any more questions? अच्छा सॉरी, हाँ आप बताइए. तो 20 फिर तो हमने 20 देखा था, सेल्फ राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ विटनेस. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे होगा? कोर्ट का ऑर्डर होगा तब तो. मैं समझा नहीं, आप पूछ क्या रहा, फिर से पूछिए. अरेस्ट कर ली, ठीक है, कर दी, कहाँ? अच्छा कहाँ होंगे स्टेटमेंट? कोर्ट में होंगे, हो गए. नहीं तो वो तो मुकर सकता, वो एडमिसेबल ही नहीं है. 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन देखा तो था. सेल्फ विटनेस के लिए तो प्रेशर कर ही नहीं सकते. लेकिन सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है, विटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप राइटिंग मटेरियल या मेडिकल के लिए मना कर सकते हैं. वो तो कोर्ट एडमिसेबल नहीं होता दिस इन पुलिस स्टेशन में और दिया हुआ बयान. देखें मान लीजिए यहाँ दे भी दिया किसी प्रेशर में आकर, वहाँ कह दे मैंने तो मुझे प्रेशर से दिया गया है, दे कैन रिफ्यूज. आप उसको शो नहीं किया, जैसे मान लीजिए कि अरेस्ट कर लिया, फ्राइडे है आज, अब अगर शो डायरी मेंटेन कर लेंगे तो मुझे 24 घंटे में से प्रोड्यूस करना होगा. लेकिन इसे प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, पुलिस प्रेशर, पॉलिटिकली प्रेशर कि आप इसको पहले तो तबीयत से इसको खातेदारी करो जेल में, तो डायरी मेंटेन नहीं की, मीन्स हिज अरेस्ट हैज नॉट बीन शोन इन द डायरी लीगली. उसका मर्डर हो गया जेल में, फिर तो हाँ मर्डर कैसे? मतलब पुलिस ने किया या किसी और ने किया? वो तो कल पे फिर तो होमिसाइड, फिर तो पुलिस के ऊपर केस है मर्डर का, कस्टोडियल डेथ का केस आ जाएगा फिर तो. नहीं देखिए, अगर पर्सन्स कहीं नहीं है, आप उसके बारे में वेयर अबाउट नहीं है, ये हेबियस कॉर्पस क्यों लाया गया? टू नो द वेयर अबाउट. कि वो बंदा, वो पर्सन है कहां. तो कोर्ट थ्रू द हेबियस कॉर्पस विल नो द प्लेस वेयर अबाउट द पर्सन. दैट्स व्हाट इज टू हैव अ बॉडी. मैंने आपको एग्जांपल दिया प्यूनिटिव का, मान लीजिए उसने अरेस्ट कर लिया, ठीक है. मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने अरेस्ट भी कर ली लेकिन मेंटेन ही नहीं किया डायरी में, वो भी लीगल डिटेंशन है. उसके अगेंस्ट में भी हो सकता केस चले जाए लोग कि पुलिस उठाकर लेके गई है, 10 दिन हो गए कोई खबर नहीं है,
हेबियस कॉर्पस है? तो पता तो चलेगा ना कि वो जिंदा है कि मर गया। तो पता चल गया तो फिर थोड़ी हेबियस कॉर्पस होगा, फिर तो कस्टोडियल डेथ हो गया ना। अगर मैं क्या कह रहा हूं, ये तब होगा जब वे डू नो द वेयर अबाउट। वेयर अबाउट हम कब किसी की जानते हैं? जब हमें नहीं पता होता कि वो बंदा, वो पर्सन है कहाँ, कोई खबर नहीं है उसकी। और उसके बाद अगर पुलिस को बुलाया जाए, उसके बाद पुलिस कहे कि वो गायब है, कहाँ गायब है, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चला कि उसकी डेथ हो गई, कैसे हुई, लास्ट टाइमली पुलिस के साथ था वो, तो हाउ ही डाइड, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि थ्रू द हेबियस कॉर्पस रेट द पर्सन एंड द कोर्ट विल नो द वेयर अबाउट ऑफ द पर्सन। अब डेड बॉडी तो जिंदा तो कर नहीं सकते, फिर उसका वो होगा इंक्वायरी कि हाउ ही डाइड, वेयर इज अ डेड बॉडी। अब ऐसा कह देने से नहीं कि वो मर गया तो डेड बॉडी तो होनी चाहिए ना, वो कोर्ट के सामने लेकर के आएंगे ही डाइड ऑन एक्सीडेंट, हाँ हमने उठाया लेकिन भाग रहा था तो रोड एक्सीडेंट में मर गया, उसका ये डेड बॉडी है। नहीं देखिए, कस्टोडियल डेट का देखिए अलग, हैबियस कॉर्पस को मतलब सिर्फ इतना है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हैबियस कॉर्पस टू नो द प्लेस और नो द वेयर अबाउट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। पुलिस ने उठाया उसे किसी क्राइम में, डायरी भी मेंटेन की, राइट, 24 घंटे के बाद उसको पुलिस के पास मजिस्ट्रेट के अंदर पेश भी कर दिया। मजिस्ट्रेट ने उसे कहा कि ठीक है 10 दिन के लिए मैं ग्रांट करता हूं रिमांड, but still he has, but his families, his friends is still not having any idea related to that कि where he is। 10 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक तो रिमांड में होनी चाहिए था, अभी तक आया नहीं केस कोर्ट में, देन ऑल्सो दे कैन फाइल एन हेबियस कॉर्पस। अगर वो कस्टोडियल डेथ है तो पुलिस बताएगी ना कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो वेयर अबाउट तो पता चलेगा। So aim of the objective of the habeas corpus is to know about the exact place, exact location, where about, where is the person। इसलिए तो कहा टू हैव अ बॉडी, कोर्ट में लेकर के आई उसे, कहाँ है वो, जय भीम, हाँ अच्छा, हाँ हाँ मूवी के थ्रू समझ सकते हैं, तो क्रिएटिव लोग हैं। हाँ, जस्ट टू नो, जैसे मान लीजिए कि आपको आपको दूसरा एग्जांपल समझना दो। आपको स्कूल में होमवर्क मिला करता होगा, सबको मिलता था, कभी आप होमवर्क करते हो कभी नहीं करते हो, मेरे जैसे रहो तो कभी नहीं करोगे। तो टीचर पूछे तुम्हारे अच्छा होमवर्क नहीं किया, होमवर्क की नोटबुक कहाँ है, कब खा गया, कहाँ खा गया, पूछेगा ना, कैसे खा गया। मीन्स दे आर डिमांडिंग यू शुड प्रोड्यूस दैट बॉडी टू द इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो लेकिन पुलिस को ले जाते लोगों ने तो देखा ना, किसी ने तो देखा ना, किसी ने तो देखा, घर से लेकर गया, कहाँ से लेकर गया, घर से लोगों ने तो देखा ना, वो कोर्ट चले जाए, फाइल करे हैबेस कॉर्पस पुलिस के अगेंस्ट में, कोर्ट उनसे जवाब करेगी कहाँ है वो, तो फिर वो कोर्ट का, फिर तो कोर्ट, पहले तो कोर्ट ये पता करेगी, वो तो डायरेक्ट फिर हेबियस कॉर्पस है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट मर्डर का केस है फिर पुलिस अथॉरिटी के ऊपर। अगर बॉडी मिल गई है फिर तो हेबियस कॉर्पस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि वो कहीं छिपा हुआ है, उसको सामने लेकर के आइए। और आप कह रहे हैं कि उसकी बॉडी मिल गई है, तो फिर तो वो कोर्ट का केस है, फिर तो वो अथॉरिटी के ऊपर जो लेकर गई है उनके ऊपर मर्डर का केस है, फिर तो दूसरा से, फिर तो वो क्रिमिनल केस है, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ से। फिर तो प्रॉपर आप मर्डर थ्रू द चैनल आइए, फिर लोअर टू हायर कोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर बॉडी नहीं मिलती है, अगर मान लीजिए लेके गए, बॉडी नहीं मिली, बच्चे का पता ही नहीं है, देन मूव टू द जुडिशरी अंडर द हैबियस कॉर्पस। अब आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन अब जुडिशरी आपकी जगह पर खोजेगी उसे, अथॉरिटी को अलाउ करेगी, बुलाएगी, आप इसे ढूंढ करके लाओ इतने दिनों में, कुछ तो बोलेगी ना अथॉरिटी आकर के कि है नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, so this habeas corpus is basically to know the whereabout, that's why it says to have a body। लेकर के आइए मेरे सामने बॉडी को, बॉडी का मतलब डेड बॉडी, बॉडी मीन्स इंडिविजुअल्स, and through that habeas corpus the state the court is trying to know about the place, locations, where about the persons। is this clear? yes or no? It's clear? So this is habeas corpus, right, as the name suggests। now if we come to the mandamus, it says to command। now what does the command means?
what does the means giving order? To act, right? So command means to do some activity. Yes or no? Now when you ask someone to do activity, when you will ask someone to do activity, when he is authorized to do something but he is not performing his task. Yes or no? When a person is authorized to do something or do certain tasks but he is not performing his task, so in that case the judiciary will come up with the mandamus. That is, they will ask the authority of what? Public or quasi public nature. Yes or no? Right? So court will ask those authority which is having a public office or having a quasi public office nature, so to perform that task. But this mandamus is an discretionary power of High Court. It means High Court can refuse to issue the mandamus. Is it clear? Yes or no? But through the mandamus, you cannot compel the president, governor to perform their duties or to act in that capacity, because they are also having a public authority or they are also having holding a public office. Is it clear? Any doubt? Right? Next we will see the mandamus. We have seen the mandamus. You have noted that point, na? Habeas corpus and mandamus. Okay, we are looking for this. Next we will see the certioraries. Now हमने mandamus discuss कर लिया, but here we will see that comparison between the two. Right? Mandamus means to command. Command means to let someone to do something, नहीं? Order. Order means to do something. जब आप जाते हो रेस्टोरेंट तब ऑर्डर करते हो, मतलब लेकर आओ. यू अलाउइंग द और यू आर ऑर्डरिंग टू परफॉर्म सम सर्टेन एक्टिविटीज. प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड. Forbid means stop. So mandamus is commanding something to do, commanding someone to perform the duty or performance. Right? Whereas prohibition means forbidding, stopping someone to do something. To do something. Is it clear? Right? This has been used against which office? Like public or quasi public office nature. Whereas this prohibition is used only against the judicial or subordinate court, we can say that, or lower court, or quasi judicial body. Okay. Now what is an objective of mandamus? Is to perform, that you should do something in which you have a capacity to do, you need to do. So it means it is to complete the task, performance to tasks. The objective of the prohibition is to keep the limit within the territorial jurisdictions, within the jurisdictions. So the reason, so this prohibition has been issued against a lower court or judicial body only to keep them within their jurisdictions. Suppose that certain court or
subordinate court or lower court, is hearing any matter, right? ठीक है, but that matter does not falls within the jurisdiction of that court. Try to understand this. If certain matter is been heard by any judicial body, but that particular matter is beyond that court jurisdictions, so higher court through the prohibition, issuing a prohibition, let that court be in within the jurisdictions. So it means if we talk about the objective of this prohibition is to keep lower court within jurisdictions. Yes or no? Do you understand? To keeping the court within its jurisdictions. It means it is restricting strictly the court to keep its or follow its jurisdiction territory, right? It means if some matter does not falls within that court jurisdictions, it has no power to hear that matter. For example, मैं आपको बताता हूँ. Recently, a 6 month or a year back, this Gujarat 11 person was freed by the governor or the court under this, क्या नाम था उस केस का? Bilkis Bano case, right? So the matter was that they have been punished by the Bombay High Court. How the Gujarat High Court can relieve? Try to get this. They had been punished by the Bombay High Court because the case was transferred to the Bombay. Now it came the question of jurisdictions. So if the punishment is done by the given by the Bombay High Court, and so the Gujarat, the matter which came under the Gujarat High Court or the governor of Gujarat is beyond the jurisdiction of that Gujarat. Yes or no? Right? So this, through prohibitions, the higher court is trying to keep the lower court within its jurisdictions. So the case which does not falls within its jurisdictions, the judiciary, the lower court is not been allowed to give a judgment or to proceed it with the pleading of that jurisdictions. Is this clear or not? Is this clear? Now this certiorari is a extensions of prohibitions. It means to quash. Now what does the quash means? Quash means? Quash का मतलब क्या होता है? Null and void. किसी को खारिज कर देना. Null and void, to make null and void. Right? Dispose of, yes. So when it will be done? So this will again done by the higher court. किसके ऑर्डर को? टू द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट. Now when the higher court will dispose of the judgment of the lower court? When it has extended or it has heard those matter which is beyond its jurisdictions. So these two are a combination. These two are in the relations, right? This prohibitions will come into the play when the trial is going on. Trial is going on. When the judgment is not passed. And someone approached to the higher court that the concerned judiciary is hearing that matter which is beyond its jurisdictions. So through prohibition, it will stop immediately. Stop that matter, hearing that matter where you are, because this matter does not fall within your jurisdictions, right? So prohibitions and certiorari's objective is similar, that to keep the lower court within their jurisdictions, but they have been issued on a different circumstances. One is been issued during the trial when the cases is been heard by the judiciary, and the another, that is certiorari's, will be heard after the judgment is passed. And when the judgment is passed by the court which does not falls within the jurisdictions, so higher court will quash that judgment of the lower court, saying that the matter which has been heard by and decided by the lower court is beyond its jurisdictions. Is it clear or not?
right? So the objective, you talk about the objective of the prohibitions and certiorari is similar, that is to keep lower court within the jurisdictions, but both has been issued on a different circumstances. One prohibition is issued when the trial is going on, before the judgment is pronounced by the any court, right? Certioraries will be issued when the judgment is passed by that court. So to check the jurisdictions, whether the court who has passed the judgment is authorized to hear that matter or not. Means it is that matter falls under within the jurisdictions of that matter, that court or not. If the matter does not falls within the jurisdictions within the court, lower court, so it will quash that judgment, means nullify that judgment. Is this clear? Any doubt? कोर्ट क्या कह सकता है? हाई कोर्ट में बात कर, हाई कोर्ट मैंडमस का जो है ना वो डिस्क्रिशनरी में है. सुप्रीम कोर्ट हम डिसाइड कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सभी रिट का एक ही मतलब, आई मीन द रिट विच इज इश्यूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, द मीनिंग हैज सेम, दे हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेम, राइट? बट मैंडमस में हाई कोर्ट अंडर 226 हैज एन डिस्क्रिशनरी पावर दैट कैन refuse to issue the mandamus to any public office, but Supreme Court cannot refuse to it. Is this clear? नहीं, वो दैट मैंने जब आपको jurisdiction समझाने के लिए कहा था. हाँ, अगर उसने कर दिया है तो that will be come under the certioraries. Is it clear? Now the last one is Q warranto. As the name suggests, Q by what authority? So what does it mean? By what authority? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To check the eligibility of the office bearer. जो individuals or any person who is holding any public office or public nature office, so the court through the Q warranto will check its eligibility. Whether the concerned persons of a public nature or quasi-public office nature, whether the concerned authority or the person is eligible to hold that office or not. ठीक है? Through example we can understand. Suppose you are traveling through a train, right? Now who is an authorized to check your ticket? TT, right? Train ticket executive. But there are certain RPF also जो protections के लिए हैं. रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ ही तो बोला मैंने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. सो आरपीएफ भी होती है, राइट? सो द आरपीएफ कैन नॉट आस्क फॉर योर टिकट. व्हाई? he is not eligible to check your ticket. So you can ask that by what authority you are checking my ticket. This is just an example to understand. Are you getting my point? So through Q warranto, the court will inquiry into the eligibility of the office bearer, that through which or by which or do you have the proper eligibility to hold the office or not. And this will be done only for the public nature office or quasi public office. Is this clear? So this is Q warranto and the 5 of the writs.